Dear friends, welcome to the Take Civil Learning. Today we're going to see the different types of multiple choice questions of construction management subject for the competitive exams. So without wasting our time, let's start the questions. Here the first question is, the main principle of an organization is unity of command and coherency, right? Effective control at all the levels, delegation of authority, and all of above. So, my dear friends, as everybody can understand that any organizations follow the certain principles and the law. So, here the unity of command, yes, of course, it will be effective control at all the levels. There must be an effective control at all the levels so that the function of organizations can work effectively. Delegation of authority means group of representation of authority and all of above. So इसका जो सही जवाब होगा वो all of above. So all of above will be correct answer. Here second question is, the main advantage of line organization is. Now first we need to understand what is line organization. चलिए कुछ इस तरीका से समझिए कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सबसे टॉप में जो होगा, ठीक है, वो मीन्स हायर पोस्ट का होगा, उसका नीचे होगा उसका लोअर पोस्ट, फिर उसका नीचे जैसे मतलब लाइक इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सपोज द चीफ इंजीनियर विल बी द टॉप मोस्ट मीन्स पोस्ट, सो बिलो दैट इंजीनियर, उसके बाद ओवरसीयर, फिर वर्कर, ठीक है, या सुपरवाइजर, जो भी होता है एक मीन्स फॉलो में होता है टॉप टू बॉटम्स, दैट इज नथिंग बट द लाइन ऑर्गेनाइजेशन. होप यू अंडरस्टैंड here. So the main advantage of line organization is effective command and control, defined responsibility at all the levels. Yes, of course it will be ability to quick decisions at all the levels. Yes, ability to quick decisions at all the levels. So in the different levels, like I said, the first is like means chief engineer, then engineer, then overseer, right? So they have to take the decisions quickly, right? So strict discipline in the organizations, like the persons who is in the topmost persons have followed the certain rules and regulations, so had made the certain rule and regulations so that the below lowers can follow it. So all of above. So here the main means correct answer will be all of above. The main disadvantage of line organization is, yes, of course, means इसका जो means मेन डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है, ठीक है, मोनोपोली एट द टॉप. यस, इट विल बी बिकॉज द पर्सन हु इज इन द टॉप मोस्ट पर्सन्स हैव सम पावर, राइट? सो मोनोपोली होता है, ठीक है. रिजिड स्ट्रक्चर, यस, इट इज रिजिड स्ट्रक्चर्स, वी हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली. डिले इन कम्युनिकेशन ये भी होता है क्योंकि मान लीजिए कि जो सबसे ऊपर इंजीनियर है, ठीक है, उसको कुछ वर्कर को बोलना रहेगा. सो हेयर दे हैव टू the means topmost persons, right? The engineer who is in top persons have must convey to the engineer, then overseer, right? Then supervisor, then worker. So there must be delay in communication. हो सकता है, ठीक है, कि delay in communication हो and all of above. So here the correct answer will be all of above. Similarly, here military organization is also known as, my dear friends, military organization is nothing but the line organizations. So line organizations is also called the military organization. So here the line organization. Similarly, Frederick W.Taylor introduced a system of working is known as means this one's the writer Frederick W.Taylor introduced the functional line organization, right? It is also a type of means what we call line means organizations. Sorry, my dear friends, it is a means what you call types of organization, right? So Frederick W.Taylor introduced functional organizations. Here the salient features of functional organization is, जो functional organization होता है उसका features क्या क्या होते हैं. सबसे पहले ये मान लीजिए कि जो line organization का जो improve होता है, ठीक है, means इसका improve version है, ठीक है. So that means the work can be done effectively. So functional organization में क्या होता है कि means प्लानिंग और इम्प्लीटेशन दोनों को दो भाग में विभाजित कर दिया रहता है, ठीक है. मीन्स कुछ वर्कर को प्लानिंग करने के लिए और कुछ वर्कर को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ठीक है, सो दैट द वर्क कैन बी कैरिड इफेक्टिवली. सो हियर देखते हैं कि मीन्स इसका फीचर्स क्या क्या होता है. स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द स्पेसिफिकेशन, यस, इट इज लाइक मीन्स द एवरी वर्कर्स मस्ट हैव एडहेरेंस टू द स्पेसिफिकेशंस. होप यू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड.
right? Separation of planning and deficiency. Yes, it here in this functional organizations, like means we have made the means planning and deficiency in the different separation. Each individual mental functional design part, it will be work in properly planned and distributed. It will be, so the correct answer will be all of you. Here, the seventh question is the type of organization used in construction industry is, as I said earlier, that the line organizations is used in our construction industry, right? Here, the topmost portions will be chief engineer, then executive, means then engineer, then overseer, then supervisors, then workers. So these types of chart follow in the line organization only. So the correct जो सही उत्तर होगा इसका, वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है, ठीक है. सिमिलरली द 8th क्वेश्चन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली यूज्ड फॉर, राइट, मींस वेयर द लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड फॉर. सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली यूज्ड फॉर सिंपलेक्स वर्क, सिंपल वर्क, राइट. The line organization cannot be used in means what you call complicated or the large project. So it is used in simple work only. Here the line and staff organization is mostly suitable for. Line and staff organization is also a type of organizations. Here what happens, इसमें क्या होता है कि it is sorry my dear friends. So here the need to be understand is what is the difference between line organization and line and staff organizations. My dear friends, it is quite similar to the means what you call line organization. What the only difference is that इसमें क्या होता है कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो फॉलो चार्ट होता है, ठीक है, उसमें 2-3 जो होता है एडवाइजर, ठीक है, रखा जाता है, ठीक है, ताकि उसको एडवाइस दे सके, इफेक्टिव वर्क हो सके, उसी को स्टाफ बोला जाता है, यानी स्टाफ सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है, जो इंजीनियर है, ओवरसीयर है, ठीक है, फिर बाहर से एक एडवाइजर रख दे, मतलब उसमें रख देगा, ठीक है, जो मीन्स एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, एडवाइजर. सो उसी को हम लोग लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेन से बोलते हैं. तो ये जो मोस्टली सुटेबल होता है सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड बोथ वर्क. सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ऑफ यू. हियर द मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स और मीन्स ओवरसीयर और सब इंजीनियर इज, जो मीन्स मेन रिस्पांसिबिलिटी होता है इंजीनियर और सब ओवरसीयर का क्या होता है, to teach the subcoordinates, means to teach the below lower post, right, to plan and execute the works. Yes, it is to understand the duties. The means overseer must understand what his or her duty is, right, and all of above. So all of above will be the correct answer. Here the owner gets assurance of the work progress and quality from कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है, मीन्स कैसा काम हो रहा है, ठीक है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका प्रोग्रेस कितना काम हुआ ना हुआ, ठीक है, वो तो मीन्स उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है दैट द ओनर कैन गेट फ्रॉम द इंजीनियर. सो इंजीनियर विल बी द करेक्ट आंसर. एग्रीगेट प्लानिंग इज for, right, aggregate planning is the planning for whole project, right. So the means planning for whole project is nothing but aggregate planning. So here the objective of technical planning is here. Now the objective of technical planning, right, means technical planning in the construction industry means, right, planning for the different types of technical work aspect, like means what you call estimations, like means specification, preparation. So this is nothing but the technical planning. जो हम लोग टेक्निकली उसको प्लान करते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसको टेक्निकल प्लानिंग बोला जाता है, right. So here the first option is preparation of specification estimates. Yes, it is initiating the procurement action of resources. Yes, it will be, right, we have to initiate the procurement action of the resources, take remedial actions about the bottleneck in executions. Yet it is and all of above. So here the correct answer will be all of above. Similarly, here the technique for establishing and maintaining priorities among the various jobs of project is known as. क्या होता है कि कोई भी मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कौन सा कार्य को पहले करना चाहिए या कौन सा बाद में करना चाहिए, ठीक है, उसका जो टेक्निक ऑफ डिटर्मिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग. सो क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग विल बी द करेक्ट आंसर. हियर लाइन ऑफ बैलेंस, ठीक है, LOB is required, is used for what? Project means planning of an project, right, planning of an activities, planning of an event, comparison, right, it is used to compare the actual progress of work with the scheduled progress of work.
So now the means hope you understand. Thank you for watching the video. Next video is coming in the series wise like that. Thank you, take care, stay happy, bye bye.